Yes, friends. Good morning, all of you. So, in the previous class, your 10th class, we have seen trigonometric ratios and how these trigonometric ratios are changing in the first quadrant. You see, if you take any angle in the first quadrant, that angle is always greater than 0 and less than 90 degree. You can see 0 to 90 okay, like 20 degree, 30 degree, 50 degree, like this. So this is we have seen in 10th class. But how these trigonometric ratios values are changing in other quadrants, it means second and third, fourth quadrants, how these values are changing. Now today we are going to see that. In this chapter we are going to learn this. So in the first quadrant, how these trigonometric ratios are changing. Just here one note. If I take one point P x comma y in the first quadrant, so here I am taking the point in the first quadrant, means x is the positive value, y also positive value. Both are positive in the first quadrant, as we know. Now if I join this P and origin with O, and if I take one perpendicular from P to x-axis, that is PA. Here one right triangle, that is OAP. Now the value of OA is x, PA is y. By following Pythagoras theorem, OP value would be square root of x square plus y square. Let it be OP is equals to something r. Let us take for example, OP is equals to r. Now the value of sin theta is y by r. Now what is the value of cos 90 minus theta? Y by r. That is also y by r. So finally one conclusion we can give that cos 90 minus theta is equals to क्या लिख सकते हैं? Sin theta. Similarly, you can prove that sin 90 minus theta is equals to cos theta. You can prove remaining trigonometric ratios like tan 90 minus theta is equals to cot theta. These all the concepts are there in the 10th class, but last year some syllabus had been reduced, so you might not have seen this. Tan 90 minus theta is equal to cot theta means how these values are changing. Like cot 90 minus theta, tan theta. You can check, students. See here, for example, for last one, cot 90 minus theta is equals to tan theta. So take tan theta value. What is the tan theta value from this figure? Just observe from here. Tan theta value. Y by x. Y by x. Yes. Now what is cos 90 minus theta value? Observe from the point A or point P. P से observe करो. वो भी y by x हो रहा है. Same sir, y by x. y by x हो रहा है. Y by x. है ना? That is why cot 90 minus theta is equals to tan theta. At last, what are the last two values? Secant theta 90 minus theta. Sec 90 minus theta is equal to cosecant theta. And cosec 90 minus theta is equals to sec theta. Very important thing is that what is the value of theta here? You see, this is a theta. Means theta value always greater than 0 and less than 90 degree. Don't forget this. 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल sin 90 minus 20, you can write this value as cos 20. मीन्स 90 minus 20 लेंगे तो 70 होगा, मीन्स sin 70 होगा.
means sin 70 is equal to, you can write cos 20. Both are same. Wait. Yes, it is visible. Sin 70 is equal to, you can write cos 20. समझ में how it is coming? You see here, sin 90 minus theta is equal to cos theta. Here theta is 20 degree. So sin 90 minus 20 is equal to cos 20 होगा. But 90 minus 20 is 70. So sin 70 is equal to cos 20. Very simple. Sum of this angle must be 90 degree. Let us move to another slide. Tell me what is the value of sin 63 in terms of cos. Sin 63 in terms of cos. Speed up. Cos 27. Very good. Cos 27 होता है. Cos 27. Like tan 12 is equals to, in terms of cot, how much? 78. Cos 7. 78. Cot how much? 78. Cot 78. 78. Yes. This is the way how these values are changing. Sin value cos में change कैसे हो रहा है, and cos value how it is changing in cot like this. है ना? And if you recall the topics in 10th class, tan theta is equals to sin theta by cos theta. Like cosecant theta is equal to 1 by sin theta, and cos theta is equal to 1 by sec theta. Values are there. You have seen in the 10th class. Okay. Now, how these trigonometric ratios are changing in the second quadrant, third quadrant, and also fourth quadrant. For that, here I am again taking second quadrant. So this is the second quadrant. If I take one point P, क्या होता है students? X coordinate is positive or negative? Hello? Negative. Yes, it must be negative. Negative x axis na. So this is the origin. So negative x and y होता है. Hello? Yes, sir. हाँ. Now if I join this P with origin, है ना? Origin के साथ join same. हाँ sir. As I have explained for the first coordinate, same. If I take something m लेंगे, now what is the value of OM? Minus OM. Actually distance देख लेंगे तो x units. Distance देख लेंगे तो x units होगा. And what is the value of PM? Y units. Y. Again let us take OP is equal to, let us take again R. Actually OP value is square root of x square plus y square, means minus x होगा, but x square. Let it be something R. Okay. Now here I am taking one angle. For example, if I take theta, I will take theta here. Okay. Now theta क्या होगा? This angle is what? Greater than 0, less than 90. नहीं. Less than, correct. greater than 90, less than 180. ये remaining angle क्या होता है? 180 minus theta. अच्छे से बोलो. More than 90. Less than 180. More Yes. than 90, less than 180. Yes. That means actually here I am taking this angle theta. ये angle, but this is in the second quadrant ना. In the second quadrant, any angle is more than 90 degree and less than 180 होता है. You know that
See, first quadrant 90 degree. So angle is existing in the second quadrant. So angle must be greater than 90 and less than 180. You know? Generally any angle, not this theta. So here I must not write the theta. If any angle here, any angle in the second quadrant is always greater than 90, less than 180. Here theta is okay. Theta हमेशा ये theta तो 0 से more than 0 and less than 90 degree. Because this angle, if you take this angle, this one, ये तो हमेशा 90 नहीं होगा और 0 भी नहीं है. 0 से ज़्यादा होता है, 90 से कम होता है. But any angle if you take in the second quadrant, generally that is more than 90 and less than 180. So more than 90 means any angle in the second quadrant you can take something 90 plus theta ऐसे ले सकते हैं. More than 90 ना, more than 90. For example, if you take 120 degree, 90 plus 30 degree. If you take 110, 90 plus 20. सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. 90 plus something you can write, or you can also write 180 minus theta also you can write. 180 minus theta भी लिख सकते हैं. For example, say any number. For example, 150 degree. 180 minus 30 degree. Right. Like you can write 90 plus 60 also. So these are the angles. जो मैं टिक किया है वो एंगल 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है. Means any angle in the second quadrant you can write as 90 plus theta or 180 minus theta. ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल सी. यहाँ से देख लेंगे तो साइन थीटा वैल्यू क्या होगा इन द सेकंड क्वाड्रेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? हेलो, Y by R. y by r. Y by r. See here, y is positive number and r is always positive because r value is square root of x square plus y square, तो r हमेशा greater than 0 होता है. So in the second quadrant, x coordinate is negative and y coordinate is positive. You know that. Okay. So here sin theta is equal to y by r. ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? हेलो, y by r वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव. कोसिकेंट थीटा r by y होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. Except these two values, sin and cosecant, if you take any remaining trigonometric ratios, that values would be negative. For example, tan theta value. What is tan theta? Y by x. Y by X. Y by x. But x is what here? Negative. Negative. X is negative ना, तो positive by negative है, negative होगा ना. Yes sir. That means in the second quadrant, but in the first quadrant, see students, all the values are positive values because in the first quadrant x positive होता है, y भी positive होता है and r always positive. That is why in the first quadrant all the trigonometric ratios are positive. But in the second quadrant, sine and cosecant both are positive except these two remaining four trigonometric ratios are negative. Is it clear students? Yes sir. हाँ, Yes, sir. जनरली क्या होता है ना, इफ यू टेक दिस साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा अगर लेंगे तो आपका वैल्यू होगा साइन कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स. साइन 90 प्लस थीटा वैल्यू हियर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा होता है. Why sin is changing as cos? Here 90 is there. When you have any odd number, see generally you can see angles are separating at 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. Generally यही होता है हमेशा.
मीन्स इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री. फ्रॉम हियर इफ यू कम लाइक दिस 180 डिग्री. अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट इफ यू गो लाइक दिस 270 डिग्री. दिस इज 270. फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 360 डिग्री. You see in these 4 angles you see 180 में 0 को हटा देंगे तो 18 is positive, sorry even. In 360 degree 36 is even. And 90 270 में देखेंगे 0 को फर्स्ट जो डिजिट छोड़ देंगे तो वो odd हो रहा है. When you have any odd value like 90 हो 270 हो, दिस ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज मतलब साइन वैल्यू कॉस होगा, कॉस वैल्यू साइन होगा, tan विल चेंज एज कॉट, कोसिकेंट विल चेंज एज सीक, सीक विल चेंज एज कोसिकेंट. ऐसे चेंज होता है. साइन कॉस होता है, कॉस साइन, tan कॉट, कॉट tan, कोसिकेंट सीकेंट एंड सीकेंट कोसिकेंट होता है. ओके. इफ यू टेक इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर लेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा. साइन फॉर एग्जांपल साइन 180 प्लस थीटा, इफ यू टेक साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, if you take sin 180 plus theta, just wait students, yes, if you take sin 180 plus theta, sin theta होता है students. Why? Because even value is there. If you have any even value, there would be no changes anything. For odd values it will change, as sin value will change as cos, cos value sin, like this. Sin 180 plus theta, sorry, this is 180 minus theta students. 180 plus theta, 180 plus theta थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा तो 180 minus theta. So if you take sin 180 minus theta, वो sin theta होता है. मीन्स ऑड के लिए चेंज होता है लेकिन इवन के लिए कुछ चेंजेस नहीं होगा. बट वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स. If you have any angle in the second quadrant like 100, 120, 150 up to 180 degree, if you have any degree angle, sine and cosecant values positive होता है students, except sin cos remaining values negative होता है in the second quadrant. But in the first quadrant all the values are positive, always positive, no negative values are there. For example you see let me open new page, या तो कुछ कंफ्यूज लग रहा है. If I take sin 180 minus theta, so sin 180 minus theta is second quadrant. Second quadrant का साइन पॉजिटिव होगा and 180 minus 180 is there, even is there. So कुछ चेंजेस नहीं होगा, sin theta ही होगा. I will explain you later on why this is not changing this. But first overall how these values are changing, let us see. If you take cos 180 minus theta, क्या होगा? 180 is there, even 180 में 180 is even, तो cos ही होता है. बट दिस cos थीटा नेगेटिव है पॉजिटिव है वो ये देखना है. 180 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? second quadrant. In the second quadrant cos value is negative ना? Yes sir. Yes sir. Yes है sir. ना? So that is where cos 180 minus theta आपको minus cos theta होता है students, minus cos theta. But sin 180 minus theta is sin theta because in the second quadrant sine and cosecants are positive. In the first quadrant all the values are positive. In the second sin and cosecant. In the third, जैसे आप लोग में ऑलरेडी हैव टेकन वन पॉइंट ना, ऐसे पॉइंट लेके कर लेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा. इन द थर्ड कोऑर्डिनेट tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स. tan cot पॉजिटिव होगा. टेल मी हाउ values means how the angle in the third coordinate. Say any angle in the third coordinate. 180 plus theta and 270 minus theta. Yes, very good. Generally 180 plus theta or 270 minus theta होते हैं. कोई भी एंगल ले लो थर्ड कोऑर्डिनेट. यू सी 180 डिग्री यहाँ से थोड़ा सा इतना तक ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इफ इट इज 210, हाउ यू कैन राइट 210? 180 plus 30. Yes, that is equal to, you can write 70 180 minus. plus 30. See, plus 30 or minus 30, always plus हो minus हो जो भी हो वो एंगल हमेशा means this theta, whatever writing this theta, ये theta जो है more than 0 and less than 90 हमेशा यही होता है स्टूडेंट्स, याद रखना. So 210 is equal to, you can write 180 plus 30, or you can write 270 minus 60. 60. Don't say that 210 is equals to होगा 900 plus 110 120 ना. Don't say like this, क्योंकि always take the angles with the what I can say one standard angle like 90 degree, 180 degree, 270, 360. Why? Because at this angle the position of angle is means the position of values are changing. Because you see 90 degree तक जाएंगे first coordinate. When you cross 90 degree you are going to entering in second coordinate. Up to 180 degree second coordinate है. When you cross 180 degree third coordinate में चले जा रहे. Up to 270 degree you are in the third coordinate. 270 क्रॉस हो गया तो आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहे. Up to 360 degree फोर्थ कोऑर्डिनेट, 360 क्रॉस हो रहा है तो फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चले जा रहे हैं, है ना. दैट इज विद दिस 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 270, 360 are important. These are the standard angles you can see. So write any number with respect to 90, 180, 270, 360. हाँ, आपको इधर 210 is equal to 90 plus 180 लिखेंगे तो this is also with respect to 90 degree. But you see this angle is 120 degree. It must not like this. I told you प्लस बाद में प्लस हो, माइनस बाद में लिखेंगे, जो भी वैल्यू 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए. मोर देन 0 एंड लेस देन 90 ऑलवेज, है ना. सो 210 यू कैन राइट 180 प्लस 30 डिग्री और 270 माइनस 60. इन द थर्ड कोऑर्डिनेट tan cot both are positive. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए एक्सप्लेन किया गया है. सेम तुम लोग चेक कर लो, थर्ड कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे तो tan cot पॉजिटिव होगा, बाकी वैल्यूज नेगेटिव होते हैं. एनी वन ऑफ यू कैन यू से इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट कौन से एंगल्स पॉजिटिव हो सकते हैं? Cosec. जो एंगल्स बच गए वही है, बोलिए. Cosec sec. कोसेकेंट एंड Cosec sec sec. cos theta, cos and sec, these two values are positive in the fourth coordinate, rest of the values are negative. And you can see, you can write here in the fourth coordinate any angle you can write as, कैसे लिख सकते हैं, 270 plus theta और 360 minus theta, है ना. सो एक न्यू स्लाइड में लिखेंगे अच्छे से. यस, आफ्टर दिस जे टेक वन स्क्रीनशॉट फॉर दिस.
yes. फर्स्ट कोऑर्डिनेट एनी एंगल 90 माइनस थीटा जैसे फॉर्म में मिलेगा. एंड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. In the second coordinate, any angle is you can write as 90 plus theta or 180 minus theta. And which trigonometric ratios are positive? Sine, cosec. Sine and cosec. Sine and cos. Okay. If you see in the third coordinate, any angle you can write as 180 plus theta or 270 minus theta. In this coordinate, tan or cot both are positive. At last, fourth coordinate, any angle you can write as 270 plus theta or bull 360 minus. And which trigonometric identities are positive in this one? That is Cosec and sec. cos and sec. This is very very important. So how to remember this? ये कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से वैल्यूज पॉजिटिव है, इसके लिए मीन देर आर डिफरेंट वेज आर देयर स्टूडेंट्स. सो आई लाइक टू गिव वन हिंट फॉर यू, दैट इज ऑल सिल्वर टी कप्स. मीन्स याद रखने के लिए जस्ट हियर आई हैव क्रिएटेड दिस. आपको मीन्स अलग भी ले सकते हैं, जैसे भी मतलब Add याद sugar रखने to के coffee, लिए. sir. Add What sugar is- to coffee. What Add is the sugar meaning to of coffee. this? All silver tea cups. इसका मीनिंग क्या है कि all means first coordinate. That means all the values are positive in the first coordinate. Silver means देखो SI आ रहा है ना, सिल्वर में SI आ रहा है, तो साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव इन द सेकंड कोऑर्डिनेट. You know that sine and cosecant both are inverse values. Cosec is equals to 1 by sine होता है और sine is equal to 1 by cos. You know that. So sine second coordinate, that means cosecant also second coordinate. Positive for the positive. So all silver means sine and cosecant are positive in the second coordinate. T mean T के साथ शुरू हो रहा है तो tan cot are positive in the third coordinate. Cups C के साथ शुरू हो रहा है तो cos sec are positive in the fourth coordinate. You no need to follow this, students. Only this is for only remembering these values in which coordinate which trigonometric ratio is positive. All silver tea cups. I like to follow this. आपको जो भी चाहिए जैसे आपको याद रख सकता है उसे, you can create these hints, है ना. All silver tea cups. That means now by following this, take screenshot for this. By following this, any angle you can write. And also see students, we have the values of this trigonometric values 0 to 90 only. 0 से 90 तक ही हमारे पास values. After 90 degree, again these values again will repeat. 0 to 90 तक जो values है वही values repeat होता है. नेगेटिव हो सकता है, it may be negative. Okay, now you see examples means for the even odd no changes are there. Already told you एक एक वैल्यू लेंगे. फॉर एग्जाम्पल साइन 180 माइनस 30 डिग्री क्या हुआ? Sin 180 minus 30 degree. See 180 minus 30, which coordinate? Second coordinate. First we have to observe that which coordinate it is. In the second coordinate, sin is positive or negative? Positive होगा. Positive. And see 180 में even है.
सो इवन है तो साइन कुछ चेंजेस नहीं होगा, साइन तो साइन ही होगा, मीन्स ये वैल्यू Plus आपको sin 30. साइन 30 डिग्री होगा. Sin 30. Yes. So sin 180 minus 30 is equals to, you can write sin 30. Like sin 180 minus 30 क्या होता है? Sin 150 ना. If you take something tan 120. Again, कौन से क्वाड्रेंट में देख लीजिए. 120 which quadrant? Second or first? Second quadrant. Second. तो Second. second quadrant. Second. In the second quadrant tan positive or negative? Negative. नेगेटिव, पहले Negative. नेगेटिव लिख दीजिए, Negative. है ना. बाद में पहले इसको लिखो. हाउ यू कैन राइट tan 120 को कैसे लिखेंगे? 90 प्लस 30. 90 प्लस 30, और यू कैन राइट 180 माइनस 60 ऑल्सो. एनीथिंग यू कैन राइट, है ना. सो फर्स्ट दिस इज सेकेंड कोऑर्डिनेट, सो ये नेगेटिव होगा. एंड यू सी 9 इज ऑड और इवन? ऑड है. सो इफ यू हैव एनी ऑड वैल्यू, these values will change with respect to their inverse values. tan value cot हो जाएगा. so here angle is 30 degree, तो 30 होते हैं. ऐसे फाइंड करते हैं. मीन tan 120 डिग्री you can find tan 120 is equals to minus cot 30 होगा. सर और 180 minus 60 में ये कैसे फाइंड करें? ये वो भी है, सेम आएगा. देखो, if you write tan 180 minus 60, हाँ, तो यहाँ पे 180 कौन minus सा और 60. कौन सा ये है? You see 180 minus 60 which quadrant? Second Second quadrant. quadrant. Second. 180 is even. No change, sir. So 10 second in the, minus 10, 60. in the second quadrant tan is negative, तो पहले negative लिख दीजिए. 180 is even, तो tan change नहीं होगा, tan ही होगा. tan 60. तो minus 10 60 होगा. Yes, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा. देखो, cot हाँ, ये 30, दोनों का tan value 60 values are same. cot Yes, sir. 30, tan 60 वैल्यू सेम होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही करना है. कोई भी वैल्यू हो, जितना भी बिग वैल्यू हो, बिकॉज वाई वी आर चेंजिंग दिस वैल्यूज, बिकॉज वी हैव द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 90 ओनली. अब 10th क्लास में टेबल देख लेंगे तो 0 से 90 तक है हमारे पास वैल्यूज. सो इफ एंगल इज मोर देन 90, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो. For that only these all the process. Angle is lying in which quadrant, and odd है, even है, ये सब कुछ देख के values find करना. For example, in the third quadrant, I am going to take one, for example, cosecant 210. How you can write 210? Hello? 270. 180 plus 30. हाँ, 270 माइनस 60 लिख सकते हैं, और 180 प्लस 30. एनीथिंग यू कैन फॉलो. आंसर तो सेम आएगा. हाँ, टेल मी 180 प्लस 30 विच क्वाड्रेंट? Third quadrant. हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट. कोसिकेंट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. पहले नेगेटिव लिख दीजिए. हियर 180 इज देयर. 180 में 180 इज इवन ना. 180 इज No इवन, change. तो नो चेंज इज देयर. कोसिकेंट ये होगा, एंगल इज 30 डिग्री माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री, मीन्स कोसिकेंट 210 इज इक्वल्स टू आपको होगा माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री होगा. ये दोनों का वैल्यू सेम है. कोसिकेंट 210 माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री, बोथ आर सेम. So by following this all silver teacups, you can find the value of any angle which is more than 90 degree. Up to 90 degree already we are having the values. You have seen in the 10th class table is there. Sin 0, sin 30, sin 45, 60, 90 tak. If angle is more than 90, you have to follow all silver teacups. By following all silver teacups, you can find the value of any angle of any trigonometric ratio. Is it clear? हेलो, यस सर, क्लियर. सबको समझ में आ रहा है? और कुछ डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा.
all silver tea cups. All means all the trigonometric ratios are positive. Silver means sine and cosecant are positive in the second quadrant. T means tan cot are positive in the third quadrant. And cups C के साथ शुरू हो रहे हैं, so cos and sec are positive in the fourth quadrant. You know that in the first quadrant angle is 90 minus theta. In the second quadrant 90 plus theta or 180 minus theta. In the third quadrant 180 plus theta or 270 minus theta. Like fourth quadrant. And you say in the first quadrant again you can write any angle 360 plus theta भी लिख सकते हैं. See here 360 minus theta means after one complete rotation, फिर if you will go again this, तो 360 plus होगा ना. अरे यहाँ से one complete rotation 360. If you take again कुछ जा रहा है तो 360 plus like for example 420. 420 क्या होता है 360 plus 120. 60 Yes, 60. है ना. सो 420 जो एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा. ओके, लाइक दिस. These are the main structure, students, how these trigonometric values are changing and how to find value of any angle more than 90 degree. Yes, some of you saying something. सर वो 420 क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया. हाँ, 420 is equal to you can write 360 plus 60 ना. So 360 means one rotation ना. 360 means one rotation होगा. Plus 60 degree is there. तो 60 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर 60 होगा ना, यहाँ से जैसे यहाँ से 60 होगा ना. यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा. 420 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा. अप टू 360 प्लस 90 क्या होगा. 450. हाँ, अप टू 450 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. मीन्स मोर देन 360 एंड लेस देन 450 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा. हाँ बोल. अगर 1200 देगा तो वो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल हाउ कितना cos 1200 अगर देगा तो cos 1200. I will explain you. 1200 बोल रहे ना, like this. Any angle, you take any big angle, you can find the value of that angle of any trigonometric ratio. I will explain you, don't worry, in the coming class. 1200 degree कैसे find करेंगे. For example, he is asking that cos 720 माइनस से कुछ होगा. yes. How to find this? Very simple, students. If you start from 0 से 360 तक one complete rotation. 360 के बाद जो भी एंगल है फिर अगेन वही आएगा ना वैल्यूज. 0 to 360. After 360 again it will come in the first quadrant, after the second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, फिर उधर आएगा. Means up to 270. 360 plus 360 270. 2 rotations. After 270 again same values. So 1200 से वो 360 subtract करते जाओ. 360s. For that you have to remember that 360 degree, 362s are how much? 720. 363s are 1080 है ना. सो इसका वैल्यू 108 पास में लग रहे ना. सो 1080 सबट्रैक्ट कर लीजिए तो 10 minus 8 is 2 and 120. So this is equal to, you can write cos 120 भी लिख सकते हैं. Cos 1200 is equal to, you can write cos 120 also. Why? Because how you are getting this 1200? 360
प्लस 360 प्लस 360, 3 टाइम्स कंप्लीट रोटेशंस के बाद आपको 1200 एंगल मिल रहा है. सो 3 टाइम्स कंप्लीट रोटेशंस आप लोग हटा देंगे तो 120 बचेगा. सो ऑब्वियसली 120 इज इन विच क्वाड्रेंट? सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट cos is नेगेटिव तो माइनस दीजिए. बट हियर Minus 9 इज cos देयर, 9 इज देयर, 9 इज ऑड, तो cos वैल्यू आपको साइन होगा. तो इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस साइन 30 होगा. तो cos 1200 इज इक्वल्स टू माइनस साइन 30 Sir. डिग्री, दैट इज माइनस 1 साइन नहीं यस होगा, सेक होगा सर. बोलो बेटा. हाँ साइन नहीं, सेक होगा. हाँ cos नहीं cos तो साइन होगा. इफ इट इज कोसिकेंट सीक होता है. इफ दिस इज कोसिकेंट तो सीक होगा. cos वैल्यू विल चेंज एज साइन एंड कोसिकेंट विल चेंज एज सीकेंट. गॉट इट अंकित? सर थोड़ा डाउट हो रहा है सर मेरे को टेल मी, यहाँ पे. बोल क्या डाउट क्या है? वो cos 90 प्लस 30 के जगह पे वहाँ पे माइनस सेक 30 होना चाहिए. If cosecant 1200 is there, so cosecant 1200 is actually 360 देख लेंगे. तेरा 360 that is 1080. So just subtract this 1080 from 1200 because value तो सेम आएगा. 120 आएगा सर. हाँ, why? Because you see very simple students. For example 60 degree, okay, this is for example 60 degree. If I take 420, वहां तक आएगा नहीं, 420 भी वहां तक आएगा ना. सेम यस सर. सेम एंगल होगा. आप यहां से एक एंगल लेंगे, 420 भी आपको 60 होगा. इफ यू ऐड दिस, ज्वाइन करेंगे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम. दैट मीन्स 60 420 बोथ आर सेम, नो चेंजेस आर देयर. मीन्स हाउ 420 इज इक्वल टू 60? 420 से 360 कंप्लीट रोटेशन जो है 360 सबट्रैक्ट कर लेंगे तो मिलेगा. मीन्स 60 420 बोथ आर सेम. लाइक दैट 360 सबट्रैक्ट करते जाओ बस. 1200 is there, 1080 means 363 times, तो 120 बचेगा. दैट इज cosecant 120. So cosecant 120 is you can write cosecant 90 plus 30. Tell me 90 plus 30 which coordinate? सेकंड क्वाड्रेंट. 90 plus 30 second coordinate ना. यस सर. तो in the second coordinate cosecant is positive. पॉजिटिव लेंगे. पॉजिटिव. So here 99 is odd, तो कोसिकेंट आपको क्या होता है? सीक होगा. एंगल इज 30 डिग्री. यस सर. So this is the way how to find the angle of any angle more than 90. Up to 360 degree just follow that all silver teacups. इसके बाद if it is more than 360 degree, how to find more than 360 degree angle, I will explain you in the coming class. Okay students? यस सर. So have you done yesterday homework that 3.1? Do you have any doubts in that exercise? नो सर. No, sir. No doubts are there? No. So see in the questions if they have given any angle in degrees, 30 degree, 60 degree like that, you have to change that angles in the radians. When you are using L is equals to R theta formula, that theta is in radians, not in degrees. You know that. Okay? Okay? So try to solve some questions in the exercise 3.2. Questions are related to this, all silver teacups only. Okay? Minimum 8 questions.
Okay, students. Okay, sir. Yes, sir. Okay, bye, students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes.